In the following statements, tick T against those which are true. मतलब जो statements true हैं उनके सामने हमें T बताना है. We have to mark them as T and F against those which are false. जो incorrect statements हैं उनके सामने हमें F लिखना है. So first statement is sound cannot travel in vacuum. जो sound है वो vacuum में से travel नहीं कर सकती. We know sound requires a medium to travel. और वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर कोई गैस भी हो सकती है, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. Second statement is the number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. We know number of oscillations per second is called as the frequency, not the time period. So this statement is incorrect, matlab false. So we will take tick to the F. Statement C is if the amplitude of vibration is large, the sound is feasible. Sound is feeble. So क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो साउंड हमारी feeble होती है. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, बिकॉज वी नो loudness of sound is directly proportional to the amplitude square. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड हमारी लाउड होगी, ना कि फेबल होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वी विल टिक टू द एफ. Statement D is for human ears the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. So this statement is correct. The human ear can only hear the frequencies between 20 hertz to 20,000 hertz. अगर इस रेंज के बाहर किसी भी फ्रीक्वेंसी की साउंड आएगी, आर ईयर्स हमारे जो कान है विल नॉट हियर दैट साउंड, उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट ई इज the lower the frequency of vibration the higher is the pitch. So this statement is false because हमें पता है जितना पिच ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. So we will tick at the F. F statement is unwanted or unpleasant sound is termed as music. So this statement is false because unwanted and unpleasant sound जो कि हमारे ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, हमारी हेल्थ इश्यूज खराब हो सकते हैं, जैसे कि हमें हेडेक हो सकता है. that kind of music is termed as noise, not the music. So we will tick to the F. Statement G is noise pollution may cause partial hearing impairment. This statement is true कि जो noise है, noise pollution, that is unwanted noise या फिर unpleasant noise that may cause hearing impairment. So this statement is true.